Should we invest in mutual fund, PMS, AIF? Actually, it's not important which product is best. Important is which product is suitable to you as an investor. Let's dive deep about mutual fund, PMS, and AIF. Let us discuss mutual fund. Mutual fund क्या है, कैसे इन्वेस्ट होता है? तो अगर देखा जाए तो सिंपली अगर देखा जाए तो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज है कि थाउजेंड्स और 100,000 इन्वेस्टर्स वो छोटा छोटा कंट्रीब्यूट करते हैं और म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है या एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो उन रिसोर्सेज को पूल करके इन्वेस्ट करती है। अब वो कहाँ इन्वेस्ट करती है, कैसे इन्वेस्ट करती है, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। म्यूचुअल फंड की एक बड़ी एडवांटेज है कि वो डाइवर्स एरियाज में इन्वेस्ट कर सकती है। तो आपका डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट एसेट क्लास में दे कैन इन्वेस्ट। इट्स वेरी सिंपल इन द सेंस आप अपने डीमेट अकाउंट पे गए, आप अपने ब्रोकरेज अकाउंट पे गए, आपको 100 रुपये लगाने, 500 रुपये लगाने, 1000 रुपये लगाने। यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन मंथली बेसिस कि सो दैट एवरी मंथ इट डज ऑन इट्स ऑन ऑटोमेटिकली। वन टाइम ऑल्सो यू कैन डू। So it is very simple and it is also SIP friendly. SIP means systematic investment plan. अच्छा, म्यूचुअल फंड में भी आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि बिकॉज म्यूचुअल फंड रिप्रेजेंट्स डिफरेंट एसेट क्लास एंड मे बी डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड। तो जैसे लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड होते हैं, लार्ज कैप मीन्स वो म्यूचुअल फंड केवल लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इंडिया की जो टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज हैं वहां पे ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर देन देयर इज अनदर कैटेगरी विच इज मिड कैप। तो आप वो अगर इफ यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन मिड कैप तो आपको वो म्यूचुअल फंड्स देखने हैं जो कि मिड कैप कैटेगरी वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। देन अनदर कैटेगरी इज स्मॉल कैप। सो एज द नेम सजेस्ट, so the companies which represents below 251. First 1 to 100 companies are large cap, 101 to 250 are mid cap, and 251 and below are small cap. And then there are certain mutual fund categories which are flexi cap. So here the fund manager have flexibility कि वो large cap में लगाए, mid cap में लगाए, small cap में लगाए, लिक्विड फंड्स में लगाए या किसी और एसेट क्लास में लगाए जैसे मेटल वाल, इवन दे कैन पुट on the loaning sides also. Another category is multi cap. So multi cap में होता है कि हर कैप में एटलीस्ट 25% की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का मतलब ये है। देन देर आर सर्टेन फंड्स विच कैटर टू द बॉन्ड मार्केट. Then there are indexes. So in that fund managers do not use any discretion. They invest in all the companies representing that index in the same proportion of the market capitalization. And similar is the ETF. We'll discuss sometime in a different interaction the difference between index and ETF. Then there are certain mutual fund which are industry specific also. जैसे डिफेंस के आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का आ गया या फार्मा का आ गया, तो वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। सम म्यूचुअल फंड्स आर लिक्विडिटी स्पेसिफिक also. So depending on your understanding, depending on in which asset class you want to allocate capital, you can make your choice about the asset class, and then you can also see which mutual fund manager or which mutual fund company can be a better choice for you, and you can take the call basis that. So we discussed about mutual fund and even in mutual fund the various asset class. So let's come to the PMS. So the name is portfolio management service. So actually these PMS services are important with investors which are having large fund. Basically we call them as HNI. If we talk about PMS, so what PMS does is, so there is a fund manager and you as an investor take their services, and that fund manager will do investment on your behalf, and the stock ownership belongs to your demat account. So what happens that there are two ways it can be handled. One is discretionary PMS and the second is the non-discretionary PMS. So in discretionary PMS you give the money to them and then they decide where to invest, how much to invest. In case of non-discretionary PMS they will suggest to you and you make a decision whether to go ahead with that particular investment or not. This is the customization which is possible. It's very suitable for a large portfolio investor. If we talk about kind of PMS, there are large number of PMS service provider in the industry. And the idea is to generate alpha, and every PMS manager try to
generate alpha return on your investment. So certain PMS manager follow contra strategy. So अगर हम contra strategy की बात करें तो जैसे आज की डेट में IT सेक्टर जो है वो डी ग्रोथ में है और वहाँ पे रिटर्न्स नहीं बन रहा, तो ऐसे सेक्टर को हम कॉन्ट्रा सेक्टर बोलते हैं कि आज की डेट में वो लो प्राइस पे अवेलेबल है, हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, साल 2 साल 3 साल में वो बाउंस बैक करेगा एंड वी विल रीप द डिविडेंड आउट ऑफ दैट. तो सर्टेन फंड मैनेजर फॉलो कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी. Certain funds are particularly industry focused. Yesterday I was meeting certain fund managers. They were focused on industries which are in the supply chain side. So they only invest in those companies which are delivery focused. Then there are certain PMS which are tech focused. So they will invest in technology company. Like today's, if you talk about these days AI or data setup companies, so they will identify good stocks in that and then they will invest in that. So with the PMS, lot of focus investment does happen, and as a fund manager, because they take large bet, so they can build more concentrated portfolio, and PMS is definitely good for large equity player, and definitely it can help in generating more positive alpha in comparison to a mutual fund. चलो हम AIF को भी इवेलुएट करते हैं. तो AIF आर alternate investment funds. It's a well defined SEBI regulated funds. अगर हम थोड़ा ब्रॉडर वे में बात करें तो SEBI ने 3 कैटेगरी में इनको ब्रॉडली डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरी 1, 2, 3. बट अगर नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करें तो एंजल फंड्स आते हैं, वेंचर फंड्स आते हैं, फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फंड्स आते हैं. देयर आर सर्टेन फंड्स विच इन्वेस्ट इन प्राइवेट क्रेडिट, देन प्राइवेट इक्विटी, जो ग्रोथ स्टेज प्राइवेट इक्विटी होती है, मिड स्टेज प्राइवेट इक्विटी होती है. जैसे कोई स्टार्टअप है, दे हैव फेयरली ग्रोन एंड नाउ दे आर गोइंग टू पब्लिक स्पेस इन नेक्स्ट 2 year 3 year. So what happens, these funds come and buy their private equity, or they invest by buying their equity. Then there are real estate funds also, which these funds will invest in the real estate assets. And then there are funds which invest in listed space, which are on the stock exchanges, NSE, BSE. So these are very large size fund, and it pools the resources of each clientele will come with a very sizable investment, and then these fund manager, depending upon the type of fund which they have launched, so they will take investing call in those funds. Let us say somebody has launched angel fund, so they will be investing in very very early stage startup. As we were discussing that, because large funds are involved, so very suitable for HNI, and generally allocations are required, or allocations are good for AIF, because many of these AIF can generate higher return than mutual fund or PMS. Also, these funds are quite suitable for family offices also. So the family offices which manage very very large size of funds, so many of these family offices, they come and take calls as far as fund allocation is concerned. One is the broader call related to AIF, and then in that broader call also they balance their profiling, risk profiling, and they do different kind of investment in different AIF.